which we have been discussing, all of us. We have been discussing this topic as a community from the last so many months. The MIIs, the regulator, and the authorities have been discussing this topic from the last 3 years. There have been discussion papers, there have been ideas, there have been extensions. But now we have come to a fag end of where a very interesting change is getting implemented in the market. And a change which is definitely improve systems and processes. But we'll speak about this. So as every BBF webinar, we begin on time, and it's 4:30. We'll start. Now, what is this business of allocation of collateral at client level? A little history to get things in perspective. Not in the very. In fact, in the recent past, the clients used to transfer the funds and securities to the broker, and we used to give it to the clearing corporation. And in the books of clearing corporation, everything belonged to broker. They never looked beyond the clearing member. There was a breakup. We used to maintain it. We used to upload to the exchanges, so even daily uploads. But then there were still risks. Okay, there were risks of misappropriation of the collateral. There's a risk that one collateral is being used for the other, and sometimes it's inadvertent. We don't even realize we're doing it. So these risks need to be mitigated. So regulator went 2 steps. First at the securities level, where the major issues were seen, and then at the funds level. Securities level, the pledge-depledge mechanism, I think it was wonderful. We all believe it was wonderful. I remember Kishorji literally dancing glee. For the first time in my life, I've seen my collateral account empty. It's such a relief. But fundamental changes, again, the CC now knew who the securities belong to and started giving limits only to that client on a segregated basis. But the funds continue to remain omnibus. Now, this will change with allocation coming in from 2nd May 22. New world in a nutshell. Client will pledge security to the broker. Broker will repledge to the CC. The CC will know whose securities clients are, which clients the securities belong to. Then client will transfer funds to the broker. Broker will transfer to the CC. It could be bank guarantee, it could be FD, it could be all the cash equivalents. Then we'll provide an allocation to the CC, and CC will know this funds belongs to which clients. Now that CC knows, CC will give limits based on what it knows. We are already prepared for 2nd May. We are preparing the segregation file on a daily basis, providing the CC, which basically has how much money client give us, how much we have retained, how much is with CC, and we are doing a T+1. Now from 2nd May, effectively it will be upfront, but I'll just explain it later. More or less, not exactly the same, but it will give you some idea. First, from 2nd May, when the client trades, first the CC will use the collateral of the clients, both funds and securities. Remember today, first they are touching the omnibus account and then giving us a securities limit. That is going to change. First the client's funds and the securities, and then they'll touch the pro. And if the pro is not sufficient, we go to risk reduction mode. An example always makes a life simple. Here, so let's look at a scenario where there's a client A, 100 rupees, client B, 100 rupees, pro funds 200, and that's total 400 rupees, which you have nicely allocated and told the CC boss here. Now, client A has used 50, client B used this 110. No problem. Because A had 100, उसमें से 50 use हो गया, we are perfectly fine. Now, B had only 100 allocated to him, and he has used 110. So, again, RRM is at 90%, so CC will use only, permit only use of 90. So 20 is at 20 less availability in BA allocation. It will be used from Pro. As simple as that. So there's no way this funds or balances of other clients will be used for some client. Another example, let's go in where we go in RRM. Again, client A 100, client B 100, Pro 200, fine. Client A has used 300. Wonderful. Client B has used nothing. And the previous scheme, it was 300 out of 400, everything was fine, but no. Today, 90 will be used from the A, what is, it just due hai. Just 210 missing in the system. 210 will be taken from Pro, but Pro has only 180, which is 90% of 200. So there's a 30 shortage. The entire broker, all his clients will go into RRM, risk reduction mode. This is how it's going to work. So, is this a problem?
See, under normal circumstances, most of us, I hope I'm correct, do not use one client funds for other client. And we have sufficient own capital to do what we want to do. Right? So for such brokers, frankly, nothing should happen. ऐसे कर लो, मैं कोई misuse तो करता नहीं, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? But there are certain complications, operational issues, or some changes that we need to be aware of and we need to be prepared for. Issue 1, penalty. Now this is a new penalty. Currently, we are paying something called margin collection penalty, which we have been paying since 2001 when derivatives started. Then it came in cash market. If you don't collect MG13 or MGTM, depending on the CC you are. That is the penalty for short collection. Now comes a new penalty for short allocation. Remember, margin collection requirement is 20% cash segment flat. And in case of derivatives, all the segments is VAR span plus ELM. And though we are collecting and reporting MG13 or MGTM, we need to allocate upfront. These are two separate penalties, and this is a new penalty which is coming in. So we may have collected but not allocated, but you'll have to pay penalty. Again, example helps. So this is the allocation we had done. Client A funds 100, replace securities 100, total 200. Client B 100, replace nil, pro 200, replace nil. Now client A and B both use 110 each. Let's say they've used derivatives, so there's no flat rate. Now the client B had also given a check of ₹50, but we had not done any allocation. Now, so there's no short collection penalty because against the due of 110, we had collected 150. So ledger में पड़ा था 50 का check आ गया. But for short allocation, he has used 110 where we allocated only 100. So on 10 rupees, there's a shortage, and whatever rate of penalty on 10, that will be applicable. So this is something which is very dramatically different. And I was speaking to a 3-in-1 account, a bank. Well, I do liya and I put my own money. Kaise hoga? But this is where I think he'll default in penalties if he doesn't take care of this. So people say, okay, can we allocate whatever we want? No, boss. Your allocation cannot exceed the client ledger balance plus other defined cases. See, there's certain exchanges have issued FAQ from time to time where we can treat all this as margin collection. For example, approved securities. It may be margin pledge, but we did not repledge it. It is margin. Or even unapproved securities, which are group 2 liquid securities, not group 3 liquid, basically. Or lien margin 3-in-1, which moved the next day to the bank account. Or the NRE balances, NRE PIS, which came on paying date. Or the KUSA shares, some percentage of that. Or uncleared check, etc., etc. So that can be allocated. But you can't allocate more than this. Again, an example helps. In the books of broker, client A has 100 rupees ledger balance, 100 approved securities, which is not replaced, and those are KUSA shares after haircut, everything. So as a broker, you can allocate minimum 100 or maximum 400. You cannot do 410, definitely. Anything between 0 to 400, it is not wrong allocation. Now, it's very important to understand the concept of deemed allocation because this is where everybody is going mad and confused. Short allocation, deemed, is deemed short, is short, deemed, so and so. So point 15 of the CB circular speaks about deemed allocation. So deemed is not same as short. So instead of deemed allocation, we are using a word active allocation. There is no such term in the circular. We've just created this term for better explanation. Active allocation, we're just saying is when we have allotted a part of our pro-owned funds to the client in lieu of other assets lying with us, like unapproved liquid securities, unapproved non-pressed, approved non-pressed securities, early pay effect, unclear check, blah, blah, blah. Deemed allocation is when part of pro-owned is automatically used by the CC, where we are not actively allocated to it. Deemed allocation does not lead to penalty, short allocation does. Again, an example, just to clarify. Broker collateral with CC is client A 100, pro 200. Now, client A has bought T2T item of 200 rupees. Now, everybody knows T2T में 100% margin. So, the margin due is 200 for that trade. Now, blocking is 90% will be from client A, 90% of 100, 90 rupees वहाँ गया. 110 will be of pro. Now, this 110, we have not done active allocation. So, 110 is deemed allocation. What was the minimum margin collection requirement?
In cash market, it's 20% flat. So it's 20% of 240 rupees we were supposed to collect. And what did we, and what have we allocated against it? 100. So there's no short allocation penalty because there was sufficient allocation. But deemed allocation happened because the margins are not sufficient. If you understand this example, if you get this example, I think 90% of the queries that I come, boss, deem ko leke sab pagal ho rahe hain. It is, there's no penalty on deep allocation, there's penalty on short allocation. We need to get that drilled into our head. Please see this video again on YouTube if required to get this concept clear. Now, फिर भी there are questions, काहे penalty क्यों दूं, मेरे pro के पैसे use हो रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? So we requested SEBI, why are you penalizing us? We requested the MIS. The MIS also presented a case to SEBI. There was a committee formed. There were lots of discussions. For example, a client is credit in one segment. He trades in the other segment. Short allocation क्यों लगा रहे हो? उसके दूसरे segment में जमा है ना? Pro का पैसा use है कि yes, I'm a rich broker. I have put enough money, or I've taken loan. I've done whatever. I've put enough money in the other segment so that even if it is deemed, there's no problem. So CC's prima facie seem to see merit in a suggestion. So there's a proposal. It's just a proposal. Nothing is finalized. That there'll be 5, 6, 7, 8 cases where genuine cases will be listed. So in the evening or next day, whenever we get, we'll first get a provisional short allocation file. कि boss, all these short allocations क्या लग रहा है? जैसे कि boss ये early paying case था, ये other segment का था, ये other CC का था. If we mark properly, then there will be no penalty on that. And if none of the proper reasons are applicable, then we have to pay penalty. This has been discussed. Minutes have been prepared. Now CCs and authorities will take a final decision. Till such time that decision doesn't come, the circular remains as it is. But we are very confident that we'll get a patient hearing on this. So the first issue that we talked about was penalty. I think we all have a general idea. Now, issue 2 that we should be aware is the segment. Now, the entire clearing corporation structure is segment based. And at some level of time, all segments disappeared, everything became one operationally, though not legally. Even today, when you give assets to CC, it is the segment assets. We maintain books of account segment wise. We do billing segment wise. But once, a few years back, exchanges decided that margin collection will be across segments. So, and after that, even the collateral, we are already giving client limits, assuming collateral for all the segments. And then exchange houses, so all the clients are used to, boss, I give 100 rupees, it is for all segment, all exchanges of that broker, which is not true technically, but that is what's happening practically. Now, any excessive use in one segment is funded by broker of their own funds. One client funds gets used, others doesn't get used. But then notionally, the G is always positive because we just put a notional entry. We count our own here is now used, our own there. So everything is fine overall. But now, own funds will be allocated. So it won't be just a notional entry, it will be real entry. So suppose G is usually the own funds. If you have got 10 crores of own fund, you'll have to actually allocate 4 crores in F&O and 3 crores in currency and another 4 crores in equity derivatives. And only that will be used. So this is going to be a problem. What is the solution of issue 2? Was get more capital into the company. Okay, now you can say, what do we do with capital? We're not allowed to invest here, but that's a separate topic for a separate level. And maybe in the future, once I do believe SEBI toyed with the idea, should we have a unified segment? Only one segment. Why do we need multiple segments? But then that is an idea under discussion till such time the current rules and the current market structure remains. The third issue that we believe that will all face is a fluid client ledger. There's a client ledger balance, allocate kar diya, we're very happy. But the client ledger balance keeps on changing. For example, if he's bought something, there'll be a 11 o'clock bill for the cash settlement. There is a F&O bill on T+1 basis. Then there'll be some interest we'll charge them, some demat charges we'll charge them. Or we'll give some of them credit for the dividend received. Galti se pool mein aa gaya tha. There'll be funds coming, pay incoming, payout going. So we have to ensure that the allocation keeps pace with the ledger plus the other collateral effects. So for in such a way that you don't over allocate when you don't have, but you don't under allocate
with the fear that because if you under allocate, it will lead to short allocation penalty. If you over allocate, it will be a wrong allocation. So a solution to issue 3 is manage your back office, get spend some money in APIs, or hire 2 people जो खाली दिन में ये कर रहा है manually कर रहा है जो भी कर रहा है. And maybe a conservative allocation in the front office will save a lot of problem. But if you want to increase business, that probably is not a great idea. So it's to each man to himself. The issue 4, this is what media loves to discuss. Everybody is discussing this. Again, this is it's very simple, but it's still very confusing. So we thought we'll bring it. Now, even today, there's a 50-50 requirement, but looking across the entire claim unit. Now it will literally go client code wise. Even in client code wise, it won't be, you are allowed to use Pro money for a client, but you can't use X client's money for Y client. Again, example, to make a point. Suppose there's a situation where client he has given securities of 100, client B has given securities of 100, no funds, only securities, pledge, repledge, subset. And Pro funds is 200, not securities. If client A takes position of 90, client B takes position of 90, there is no difficulty because Pro has enough money. In fact, probably Pro can also take a position of 180. But the 50-50 ratio is maintained. There's sufficient cash available. So if the broker has sufficient cash, he can permit clients to give more securities. Not necessarily 50-50 cash. But any broker, how much money are you going to put? For every 100 rupees of securities of a client, if you're going to put 100 rupees, you need to be a very, very resourceful broker. And it is not a good idea because when markets fall, the value of securities fall dramatically and that creates a domino effect. So as a good practice, probably the entire market should follow 50-50. But as the regulations stand, 50-50 is the relationship between the CM and the CC, the relationship between the client and the TM, in many cases the SCM, is still open. The 5th issue we believe is is the RRM. We have touched upon it again. I'm again touching upon it. This is the point in CV circular which talks about RRM. And if the client overuses, Pro will be used. If Pro hits 90, entire broker in RRM, including the clients. It's a huge operational risk. Just imagine a broker. Okay, he has 100 clients. Each client is given 1 crore rupees and he has given an aram se baitha. He's not given a single rupee of Pro. One client becomes 90.1% of the exposure, even because of change in margin rate. CC will look in Pro, all of them shut. So for 100, if you have 100 crores of assets, 10 crores each, say 100 crores of assets, one client goes off by 1 lakh rupees. At 9 crore 1 lakh rupees, you are going to be shut as a broker. So it's a mess if you don't handle it well. So I'm just trying to look at the future. What will we be doing on 2nd May? Say I'm on 1st May. At the end of the day, 5 p.m., 6 p.m., whenever the CC is given the time, we check all the client ledger balances, and decide kisko kya allocation karna, and we load a file to the CC. Client को days is उनका इतना collection, B का उतना, C का उतना, D का, ये allocate हो गया. अरे successful आ गया ओके ठीक है घर जाओ. Next day morning, yesterday जो load किया उस हिसाब से everybody is allocated, सब काम कर रहे मस्ती से. अचानक एक client बोलता है यार आप transferred 1 crore rupees, thank you very much, please transfer. Now suppose I have sufficient Pro money lying, so I'll convert 1 crore Pro to 1 crore client, and that money is lying in the client account, no difficulty. Or I can say चलो ABC करो, ABC करके we allocate 1 crore to that client. Fine. The client बोलता है मुझे urgent payout चाहिए. अच्छा ठीक है इसका allocation कम करो, तो इसको payout दो. And in the evening, if there's no change, if your client balances are more or less same, which is not going to happen, and T+2 billing सबका चलता रहेगा, पूरा file फिर से load करके फिर reallocate करो. फिर अगले दिन सुबह फिर तैयारी करो. Now, most people see ये कैसे होगा. We are stockbrokers from 65 years. Okay? And many of us are very old brokers. 95% of the clients, they give money advance एक दिन पहले. Okay, 1% clients who come today and say, अभी का भी पैसा लो, अभी का भी मेरे को limit चाहिए. For that 1%, we have to do all the gana majority.
If you choose and say मेरे यहाँ काम करना है, एक दिन पहले पैसा दो वरना भाड़ में जाओ, आज पैसा दिया कल लिमिट मिलेगा, you may choose to do it, you may not choose to do it, depending on your business models, depending on your service levels. But anybody who says it's not possible is actually fibbing himself. Everything is possible. You have to just have to set up systems and processes. Just in a few points to ponder, which we may miss. PCMs will not be able to give 100% limit to their TMs. जो अभी दे सकते थे. It will be capped at 90 the way system is designed. Second point is all of us will face the issue if the client gives you 100 rupees. In the front end, तुम 90 दोगे कि 100 दोगे? If you give 90, which is fine. If you give 100, then be prepared to keep your 10% own prop capital ready. Previously, because it was all mixed, so some other clients' excess money also used to be counted towards the 10 ka cushion. That is gone. That's out of the window. It's an individual business model will also do. A third is early payments. Often clients sell shares throughout the day, and we do early paying at the end of the day. But then it's quite possible that during the day the proof. Now many of us are not going to take margins from the client if they sell shares for delivery, because sham ko early paying karna. But that money has to be paid by Pro. Now Pro may or may not have so much capital. So suppose you have put 10 crores in Pro and the client ने T2T में 12 crore का माल बेच दिया, तो हो ही नहीं सकता. So या तो तुम early paying करेगा या फिर उससे 5 crore का माल भी बेचा. And the Pro is only 5 left. So you have to immediately do early paying of that fellow at 5 o'clock, at 10 o'clock, 10:30, whenever it's sold, so that the Pro keeps on getting released, so that you can give sell without margin for delivery-based sale for early paying to other clients. Or so this multiple early paying batches is a practice that we may all have to consider. And then again, there's a big. Some client is just if there's a increase in margin rate due to volatility. So end of the day collection penalty तो है ही, short collection penalty भी उसके अंदर एक नया risk आ सकता है. And this is it. Finally, there's one point I forgot to put on the slide. When pledge repledge came, okay, we had a 15-day no penalty period for margins, if you remember. Then when this segregation came, we had almost 2 months where you can load data, load karo, galat ko save karo with no penalty. Now allocation is coming, so we hope that regulator will give us some time. They'll not penalize us from day one. A few months for us to adjust to the new system. That is something which we expect. And from the way I talk to regulator is sympathetic, MIs are sympathetic. Let's see how it works. Test environment, we are asking. All CCs have kind of, when I spoke to them, by next week, every CC would probably be having the test environment place. Use well. So, all right, we move to Q&A session. The Q&A session of BBF is the usual. Please raise your electronic hand. BBF officials will turn on the mic. Based on the questions you asked, somebody from the panel will answer the question. Our panel is heavy duty. We have officials from ICCL, we have officials from NCL, and we've got some very intelligent fellow brokers who can answer the questions. So over to you, Vispy, to handle the to moderate the Q&A, please. Ujjwal, Vispy, are you moderating the Q&A? Yes, I'm here. I'll do. Yes, please. Yes, Rakesh ji. हेलो. हाँ जी सर, आवाज आ रही है. उत्तम जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टॉक रिप्लेज हो रहा है उसके ऊपर जो लिमिट दे रहा है एक्सचेंज, तो जैसे एनसीएल वाला है सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज करके अपने को एक फाइल दे रहा है कि कौन से क्लाइंट को कितना लिमिट मिल रहा है कौन से स्टॉक के ऊपर, वो लिमिट का फाइल अपने को ईओडी में आ रहा है 8 बजे के आजू बाजू. सबसे पहले एक ग्लोबल लेवल स्टॉक का लिमिट है, एक ब्रोकर लेवल लिमिट है. तो ड्यूरिंग द मार्केट कोई अगर रियल टाइम एपीआई के थ्रू रिप्लेज कर रहा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है. फर्स्ट थिंग. सेकंड, ये जो भी जितनी भी अप्रूव लिस्ट दे रहा है एक्सचेंज, जो एनसीएल हो, आईसीसीएल हो और एमसीएक्स, एमसीडीएक्स, सबका एक अप्रूव लिस्ट का फॉर्मेट कॉमन होना चाहिए, ताकि क्या मतलब कॉमन मतलब स्क्रिप और हेयरकट कॉमन नहीं होना चाहिए, पर अपलोड का ऐसा जो एनसीएल वाले का भी आ रहा है 20 तारीख को, सब अलग अलग कॉलम में आ रहा है, कैश नॉन कैश, क्योंकि इसमें सब कुछ हम लोग को अलग अलग करना पड़ेगा.
तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सेकंड, जो मेरा अलग अलग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से बात हो रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग फीफो बेसिस से जिसने रिप्लेस किया ना उसको बेनिफिट देंगे। तो फीफो बेसिस का मतलब कैसे होता है कि अगर समझ लो कि पीएसएन नंबर मेरा 1 2 3 4 5 करके 125 तक एक स्क्रिप्ट का किसी ने रिप्लेस किया है, से फॉर एग्जांपल XYZ स्क्रिप्ट है, उसमें मेरे यहाँ पर 5 क्लाइंट को बेनिफिट मिल रहा है। तीसरे नंबर के क्लाइंट ने फंजिबिलिटी में एफओ से सीडी में मूव कर दिया है स्टॉक ईओडी में, तो उसको बाद में सीडी में वो एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब प्रॉब्लम है। ये सब तो basically आपका question is for replace of securities. Now Yes. there are two parts. One is each CC has its own limits per security limit, CM level limit ये वो, तो replace securities accept कर लेता है, इसका limit देता नहीं है. My first question to NCL and ICCL also, that if I have replaced securities, maybe the CC has not given me limits against it, but will it be sufficient for short margin, short allocation requirement? I have allocated. It's automatic allocation actually. नहीं, वो उसका डिप्ड एलोकेशन होगा, वो लोग ने ऐसे बताया। नहीं, उनको वो है, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आएगा कि suppose I replaced 1 lakh shares of Reliance, and for whatever reasons you have given, CC has given limit of 10,000 because there's a per CM limit, say, but the client has traded, has taken position of more than up to worth 90% of that, and everything got deemed as sufficient inflow, no difficulty. Will there be a short allocation penalty in such a case? First specific question. CCs? Yes, उसमें the expectation is that you will have to allocate cash to. For example, if the limit is 1,000, let's say 1,000 quantity, or the 1 lakh quantity for a stock, and if you are giving more than 1 lakh, तो जो भी 1 lakh के ऊपर दे रहे हैं उसके लिए allocation करना पड़ेगा. Okay. And if I don't allocate, then it's subject to short allocation penalty, because obviously there'll be deeming will hit, but they see, other thing that I think practically what you can consider is see in this again, like you discussed earlier कि ये proposal है, वो final circular आएगा very soon, but what is under discussion is that if you submit the allocation request and then place the order, it is no, there will be no penalty. So suppose मतलब let us imagine that same thing कि 1 lakh quantity है and किसी client को benefit नहीं मिल रहा है. Now I want to place an order for this client. So if I place a allocation request and place the order no, one after the other immediately, even if the allocation takes, let's say, 10 minutes at CC and order goes through before that, there will be no penalty. सर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन क्या है, सी फॉर एग्जांपल ब्रोकर को कैसे पता चलेगा कौन से क्लाइंट को कितना अलोकेशन का बेनिफिट मिला है, क्योंकि आपने ऐसा बोला है कि अलोकेशन अगर कोई स्क्रिप्ट का लिमिट ब्रोकर लेवल या ग्लोबल लेवल पे हिट हो गया है तो उसके ऊपर का जो भी अलोकेट किया रहेगा उसका लिमिट नहीं मिलेगा, उसके सामने आप डिम्ड अलोकेशन करोगे, उसके ऊपर पेनल्टी लगने वाला है। तो ब्रोकर को कैसे पता चलेगा रियल टाइम के कौन से क्लाइंट को बेनिफिट मिलने वाला है? मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट है, मल्टीपल सिंगल स्क्रिप्ट में बहुत सारे क्लाइंट ने रिप्लेस करके रखा है, तो मुझे टीम फंड can this report, can this report be online? Hello, sir, Uzefa here. So wherever there is a quantity limit, there the moment you pledge or when you replace to CC, we immediately inform you whether that quantity is accepted or not, or whether for that quantity the limit is given or not. So today there are multiple limits. One is a value-based limit and one is a quantity limit. So value-based limit and all that will now come based on the utilization and not on FIFO basis. But quantity limits anyway will continue, and that anyway the moment you pledge, you can come to know whether that quantity is eligible or not. So that today that also real time only you come to know, and that will continue. So you will real time come to know whether that quantity is eligible because of the market wide or member wise limit or not. Okay. It is not that after trade you will come to know that whether that quantity will be eligible or not.
नहीं पर सर एक ही फाइल आ रहा है ना, सिक्योरिटी अंडरस्कोर प्लेज करके जो फाइल आ रहा है वही है शायद। नहीं 8 सर, बजे के आसपास। आपको रियल टाइम जो सिस्टम है, एटलीस्ट एट एनसीएल एंड जो रियल टाइम सिस्टम है, वहाँ पे भी हम लोग बताते हैं कि कौन सा क्वांटिटी आपने कितना प्लेस किया और कितना क्वांटिटी आपके पास एलिजिबल है आउट ऑफ दैट, so that we are नहीं showing मतलब even what is that? intraday also. What is that system called? Intraday on NMAS also we show that, sir. बस एनमास पे देख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। और अदर एक्सचेंज, अदर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मतलब ये तो एनसीएल का हुआ। Hello. 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 Yes, Tripti, we can hear you. We are also following the same thing. Based on utilization, you will get the details in RTRMS system. What are all the utilization is consumed by particular client, how much collateral is consumed by the client. Okay. So all these detail will reflect in RTRMS system. Rakesh bhai, on behalf of the association community, as an association will take up this matter with you. ये तो ओके, थैंक यू। because ये थोड़ा interpretation बहुत ज्यादा strict है, because SEBI circular clear बोलता है the value of it should be allocated plus repledge के जो value है उस उतना होना चाहिए, उतना है नहीं यार। सर, अब बाकी नहीं, हमारा डीम लग गया तो पेनल्टी क्यों ले रहे हो यार? हमने तो नहीं, क्लाइंट से हाँ मार्जिन बराबर, लिया है। मेरा क्वेश्चन वही है कि हम लोग ने आगे रिप्लेस किया है। मैं इशू समझ गया। We will take it up with SEBI. If we can convince SEBI and we can convince the MIS, ठीक है। But अभी current stand ये है। This is the understanding. But thank you for bringing up this point, Rakesh. Thank you, appreciate it. थैंक यू। Please conduct the meeting. If you can, or Yes, sir. So, Sandeep ji, your question. Yes, sir. I have one query. Supposingly, if we have only one customer whose 100 rupees stock is repledged with the clearing corporation, and if we wish to allow them 90 rupees exposure as margin, do we, if we put a fund of rupees 50 in a pro, will that suffice, or we have to put 100 as a fund in pro for allowing a 90 rupees exposure against repledge value, sir? I think 50 से काम होना चाहिए ना? So because we are getting तो again I'll rephrase that question, Sandeep जी. एक क्लाइंट ने 100 रुपए का माल दिया, आफ्टर हैकेट वैकेट सब है और सब एलिजिबल है, तो उसके सामने 90 तो उसका हक बनता है, एंड प्रोम ने 50 रुपए दे दिए। यदि क्लाइंट ने 90 यूज कर लिया तो 45 क्लाइंट का जाएगा, 45 प्रो का जाएगा। इज दैट करेक्ट? कि जाएगा नहीं, क्लाइंट का 90 जाएगा, डबल 1। Yes, sir. This is the question. Can the CC answer? नहीं, ऐसा कैश या नॉन कैश, तो ये एग्जांपल में क्लाइंट का स्टॉक है और प्रॉप का कैश है। But okay, I'll repeat again. क्लाइंट का 100 का स्टॉक है, which is worth 90 because of RRM, and cash pro का cash is 50 only, 50, and the client has traded 90. So will this lead to RRM or will this be okay? Will the system accept this? Specific question है ना, संदीप जी? Yeah, sir. ये इसमें प्रॉप का 50 है ना? हाँ, नहीं तो आरआरएम में नहीं जाएगा आपका, क्योंकि इसमें क्लाइंट का कैश नहीं जाएगा। Because 100 at the border. Exactly. ये बॉर्डर है, 1 रुपया कम कर लेते हो, बट ठीक है। 89 पे तो नहीं जाना चाहिए ना सर आरआरएम में। अगर 89 का क्लाइंट ने मार्जिन यूज किया 44.5 उसके स्टॉक से और 44.5 प्रॉप को डेबिट हो जाएगा, तो वी विल बी स्टिल एनेबल्ड। हाँ, तो वो अनेबल होगा ना, बस ये संदीप जी ये सवाल पूछे। संदीप जी नहीं जाएगा, ये जवाब मिल गया आपको? Yes, sir. I got the answer. Perfect. Nilesh ji, your question, please. Nilesh ji. Hello. Yeah. Yeah. Uzevaji Nilesh here from Comtech. The question is related to the snapshot. Now, as we understand, the deem allocation will happen snapshot wise, like that of peak margin. So that is right. You will be calculating deemed allocation at the stage of peak margin snapshot. So is that correct? Deemed allocation नहीं, short allocation.
So dim allocation value will be calculated per snapshot. Josefaji or any other? Nilesh, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? No, I'll tell you, sir. Penalty calculation. Yeah, no. The question is that if it is calculated snapshot wise, suppose there is a dimmed allocation on first snapshot, then second snapshot there is no dim allocation because client has squared off. On third snapshot also say there is a dimmed allocation. So the value of dim allocation will be different each time. So whether the penalty will be charged on the max of dimmed allocation or each instant of dim allocation. चलो कैसे भी पेनल्टी चार्ज से क्या फर्क पड़ता है? सर पेनल्टी कैसे चार्ज होएगा? सपोज फर्स्ट डीम्ड एलोकेशन में 25 डीम्ड हो गया, थर्ड में हो गया 10. सो वेदर पेनल्टी विल बी ऑन 25 प्लस 10 और इट इज हाईएस्ट दैट इज 25 पे लगेगा. सर पहले तो क्लियर कर लो, पेनल्टी डीम्ड एलोकेशन पे नहीं है, शॉर्ट एलोकेशन पे है. पहले तो आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना. हाँ सर वो क्लियर है. लाइक देयर इज अ लेक्चर, वो डीम्ड वर्ड यूज मत कीजिए आप. Terminology बहुत important. Correct. So suppose there is a short allocation, then so मतलब मैक्स पे लगेगा कि किस पे लगेगा आप ये पूछ रहे हैं? मल्टीपल टाइम. चलो ठीक. और ये सवाल नोट हो गया. और कोई सवाल? दिलीश में और कोई सवाल? नहीं. ठीक है. ओके. वो जितना लगेगा तो लगेगा, उससे इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क पड़ता है? ये तो एकेडमिक क्यूरियोसिटी के लिए है. चल ठीक है. हाँ, so quantum of penalty. ओके ठीक है. तो सर ये क्वेश्चन मैं एक बार साइड में रख रहा हूँ, उसको बाद में रिप्लाई होता है. Hello. Yes, Himanshu. Yeah, sir. I have one question. Like in just now, in F&O segment, if we have number of clients 1 to 25, suppose, and all have repledged the shares, and we have repledged to exchange clearing corporation, if we get the benefit of first of 15 client only, if they trade, then only first 10 client only, if they trade, then only we get benefit. If client number 20th trades, we don't get any benefit. This is the existing issue even today. So will it be rectified at the time of after 1st May? Otherwise, no point. How can we get so much funds? Hitanshu bhai, ये तो आज का भी problem है. I think they are solving. Hold on. Let the CCs respond. They are solving this in the next iteration. 1st May, they should say they should. Let the CCs confirm. It will not be on a FIFO basis. It will be on utilization. Yes. So if I understand correctly, if there are not 10 clients who have given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and suppose cash is 5 and everybody has given 5 collateral, we will not upfront mark ki 1 to 5 ka eligible hai and 6 to 10 ka ineligible hai. Whichever 5 clients, suppose client number 3 trades, then 9 trades, then 7 trades, then ऐसे 5 client ने trade कर लिया, they will get benefit. And after 5 clients, the 6th client trades, the 6th client will not get benefit. So it was in the order of the clients taking exposure, not in the order of who has pledged first. So in short, I will not get benefit of the collect which client number 20th has given. If I have traded for 5 clients, and if I trade for number 6, 20th client, if I trade, I will not get benefit. You are saying that collect benefit? No, I said that if you have, suppose you have 5 rupees cash and you have 10 rupees non-cash, and that 10 rupees non-cash is given by 10 different clients, definitely you are not going to get benefit of entire 10 because cash is only 5 in the system. But ये 10 clients में से किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, whoever trades first will get, whoever trades later on will not get. Basically. Okay, that's okay. Thank you. So Bhanu, is it fair to say first use, first serve instead of first pledge, first serve? Yes. Okay. Nimesh ji, your question, please. Hello. Sir, I have 2 questions basically. Margin जो भी आप ब्लॉक करने वाले हैं या allocate करने वाले हैं, वो वार मार्जिन प्लस ELM होने वाला है प्लस एडिशनल होने वाला है या अपफ्रंट मार्जिन जो 20% लगता है मिनिमम मार्जिन? वो तो फुल होगा ना, सीसी तो फुल मार्जिन लेगा आपसे. हाँ, but client requirement end of the day for me it's a 20% of minimum margin, right?
यार आज के तारीख में भी तुम क्लाइंट से 20 लो, लेकिन सीसी तो पुल लेता है ना, ट्रेड टू ट्रेड करेगा तो पूरा 100 लेगा। मेरे क्लाइंट ने 1 लाख रुपए दिया था और 20,000 रुपए दिया था और उसने 1 लाख रुपए का वर्थ ऑफ ट्रेड कर दिया। फॉर मी ईओडी मार्जिन इज सफाइस। तो उसके लिए डीम्ड एलोकेशन होगा क्या फिर बाकी? डीम्ड एलोकेशन होगा, लेकिन शॉर्ट एलोकेशन की पेनल्टी नहीं लगेगी। ओके। एंड एम2एम लॉस वगैरह फॉर एफएनओ केसेस? सर वो तो प्रेजेंट प्रैक्टिस है ना, M2M तो आप T+2 तक कलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसमें भी डीम्ड एलोकेशन होगा बट पेनल्टी नहीं लगेगी, राइट? करेक्ट, वो शॉर्ट एलोकेशन नहीं बनेगा, इसीलिए वी आर अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू टर्म्स, डीम्ड एलोकेशन एंड शॉर्ट एलोकेशन। Sir, some similar case in case of segregation also, if client is having only M2M margin, which is supposed to be collected by T+1, and if I am not giving data in the today's file, so it is you are giving penalty for that also. डेटा दे दो ना 0-0 करके, पेनल्टी नहीं लगेगा। 0 नहीं देने का बोला है ना। Okay. Should I take it further? Animesh, this is not answered. This question is not answered. ठीक है sir. But Animesh, noted. I'll try to get the answer for this. Thank you, sir. Rajesh ji, your question, please. So, sir, my question was that so this additional limit fundamental will vanish from the market or what? Hi, क्या चीज? Additional limits, ad hoc limits, that fundamental will vanish from the market, right? By this new framework. ये additional limit fundamental क्या होता है? ये चीज क्या होती है? Additional limits given to the clients and all that. आज के टाइम में भी कहाँ दे सकते? वो तो अभी भी नहीं दे सकते ना? And the second question was that how real time will be this, and what are the possibilities of getting the rejection on collateral and funds which we are reporting to ICCL? Specific question. Okay, तो सीसी सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या दे रहे हो? ये टर्नअराउंड टाइम क्या प्रॉमिस कर रहे हो? ICCL? Some questions for you. So Rajesh ji, if I could rephrase your question, यदि मैं सिस्टम में मॉडिफिकेशन डालूं कि मुझे कोलैटरल्स पे एलोकेट करना है या फाइल लोड करूं या एपीआई so तो कितने जल्दी रिस्पांस आएगा, है ना? Yes. ये सवाल है ना? Yeah, because we are allocating limits and all that on real time basis right now. So how quick this can be, and what are the possibilities of you can say rejections? ICCL has to answer this. Hello, Hitesh, are you on there? Hello. Hello. Yes. It will be, sir. Hitesh, Sir, it will be a near real time basis, and rejection will be based on your files. If there are certain wrong that wrong CM code, that list is given in the circular, so that you can refer. Okay. But it will be a near real time basis response. Near real time, Rajesh. Thank you. Thank you. Rakesh ji, your question, please. Rakesh ji. हेलो हाँ जी। उत्तम जी, जैसे आपने बताया कि जनवरी में हम लोग ने कुछ सेबी को एक प्रपोजल दिया है, वो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी क्लाइंट का अगर मुझे स्टॉक बेचना है तो सबसे पहले अर्ली बेइंग करना पड़ेगा, कंपलसरी। नहीं, हाँ, इसका मतलब ये है ना, पहले अर्ली बेइंग करना है, बाद में बेचना है। यदि वो प्रपोजल नहीं माना तो यार राकेश भाई, इसका इम्प्लीकेशन यही हो गया, कोई भी स्टॉक बेचे उसके बाद, बिकॉज़ आप उसको एडवांस में एलोकेट नहीं कर सकते कि उसको लेजर में बैलेंस नहीं। बराबर है, वो डीपी से अगर बेच रहा है, उसको आईपीओ में स्टॉक लगा, डीपी से बेच रहा है, तो कोलेटरल तो कुछ है नहीं, तो मैं एलोकेट नहीं कर सकता हूं। बट से भी मान जाएगी, वो बहुत रीजनेबल लोग हैं, मतलब बेसिकली बाजार सुधारना चाहते हैं, बट हम बनवा लेंगे। बट आपका पॉइंट दुरुस्त है, यदि वो नहीं माने तो उसका इम्प्लीकेशन ये हो जाएगा, ये आपका बहुत दुरुस्त है, और उसका सोल्यूशन ये है सारे क्लाइंटों से प्लेज कराना पड़ेगा सिक्योरिटीज। बट फिर भी योर पॉइंट इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। बट वो ऐसा होगा नहीं।
Usniwal ji, your question, please. Yeah, question for NCL. Right now, if customer buy options and Swarup the same day, then only the difference needs to be collected by T+1 day, which is consolidated obligation. Right, and margin gets charged to be consolidated pool real time and get released. How this will happen in a new environment? Customer money has to be there, or it will be a complete deemed or pre-allocation. लाख रुपए में स्टॉक कपड़े के लिए चाहिए। कृष्णा जी क्वेश्चन एकदम क्लियर नहीं था। मतलब बेसिकली किसी ने ऑप्शन खरीद के ऑप्शन बेचा इंट्राडे, तो आज की तारीख में तो उसका एंड ऑफ डे मार्जिन नहीं होता, लेकिन जब उसको खरीदता है तब तो मार्जिन लगता है ना। कृष्णा जी आपकी आवाज चली गई। हेलो, हाँ आ गई आवाज। हाँ तो जब भी वो खरीदता है तभी मार्जिन लगता है, राइट? हाँ, तो उतना उसका एलोकेट होना चाहिए या उसका रिप्लेस होना चाहिए, है ना। हेलो, यस से एक चीज था, क्लाइंट ने अगर 1 लाख रुपए का स्टॉक प्लेज किया हुआ है, मार्जिन प्लेज, and in turn we have repledged to ICCL, and client has taken position in F&O worth of 75,000 rupees suppose. तो at the end of the day जो स्टॉक हमने ICCL में प्लेज किया है वो वहां से अनप्लेज करके we have to move it to CC. चिंतन में आपका क्वेश्चन नहीं समझा। एक क्लाइंट उसने लाख रुपए का शेयर प्लेज किया आपको, आपने प्लेज कर दिया सीसी को, और एफएनओ सेगमेंट सीसी को कर दिया और एफएनओ सेगमेंट में किया। हाँ, नाउ क्लाइंट ने एफएनओ में काम कर लिया। हाँ तो बढ़िया है ना, क्या तकलीफ है। अब और कुछ नहीं करना। नहीं, आईसीसीएल में हमने प्लेज किया हुआ था। आईसीसीएल के कौन से सेगमेंट में? कैश में किया था सेगमेंट? कैश सेगमेंट में। अच्छा, कैश सेगमेंट में काम किया और एफएनओ में यूज कर लिया उसने। हाँ, और हमारा एफएनओ में क्लियरिंग सीएम से करवाते हैं। तो एफएनओ में एक बार डीम्ड एलोकेशन हो जाएगा, रो का पैसा अटक जाएगा। फाइन, ठीक है, उसके लिए हाँ करेक्ट। फिर आप यहाँ से क्लाइंट को पेनल्टी लगेगा क्या? आज के तारीख में लगेगा, लेकिन हम स्पेशल आपके प्रेजेंटेशन पे ध्यान तो स्लाइड वापस देखिएगा जरूर। उसमें ये कि हम ऐसे केसेस में आपको शाम को हम एक रिक्वेस्ट किया है कि प्रोसीजर होगा एग्जामिशन का, आपको रिपोर्ट आएगा भैया इसका क्या लफड़ा है, फिर आप बोलेंगे इसका दूसरी सेगमेंट पर पड़ा हुआ था, उसके बेसिस पे पेनल्टी माफ हो जाएगी। ऐसा रिक्वेस्ट पेंडिंग है सेबी के पास, वो उस पर सोचें। Okay, but no need to unpledge from ICCL and pledge it with the CM. See, point is ideally you should unpledge and repledge because आपके पैसे छुट्टे होते हैं। हाँ, compliance point of view नहीं, normal धंधे के point of view से बोल रहा हूँ। ठीक है, compliance के point of view से decisions will come soon. Yes. उत्तम जी एक correction या ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है दैट इज ओनली फॉर इंट्राडे ना, एट एंड ऑफ डे यू हैव टू हैव द एलोकेशन इन द करेक्ट सेगमेंट। So in okay, that case that stands clarified. Okay, so in that case we have to get it unpledged from ICCL and we have to pledge those stores with the clearing member. Yes, at the end of the day. That is what the CC is saying. Okay, and intraday में peak margin वगैरह it will not be a problem if those proposals are accepted. Yes. Okay, so it is ifs and buts. Yes sir. Purvis, your question please. Yeah, Uttam ji, can you please explain once again a difference between deemed and a short allocation? Virender bhai.
देखिए शॉर्ट एलोकेशन वो है जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे आपके पास शेयर पड़े हुए हैं क्लाइंट के, आपने उसको ट्रेड करने दे दिया बिना एलोकेट किए, तो वो शॉर्ट एलोकेशन हो गया। अभी तो एक्सचेंज ने आपके प्रॉप कैपिटल से कर दिया, दैट्स डीम्ड एलोकेशन। I don't know how I should explain it further. Basically, I'll try now. You try. But ये एक्चुअली हम लोग खुद ये टॉपिक पे डिस्कस करते थे, दो बार हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। So point is active allocation and deemed allocation. Okay, active allocation में ideal. Okay, let's go to scenario 1. क्लाइंट का ₹1,00,000 लेजर जमा था, आपने ₹1,00,000 उसको एलोकेट कर दिया। ये सीधा सीधा इसमें कोई कंफ्यूजन उदृश भाई? एलोकेशन कर दिया है, कर दिया सीसी को, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। एलोकेशन है तो कंफ्यूजन नहीं है। ओके। अब उसने अपने को ₹1,00,000 दिया, आपने कुछ एलोकेट नहीं किया उसको। ओके, यस। अब क्लाइंट अकाउंट में पड़ा हुआ, नहीं एलोकेट किया, आपकी इच्छा नहीं करना मेरे, फिर उसने काम कर लिया, ठीक है, उसने काम किया तो एक बार प्रो से डीम्ड यूज हो गया। फेयर, यस, फाइन। तो प्रो से डीम्ड कितना यूज हुआ? अब वो ट्रेड टू ट्रेड किया तो उसका ₹100 यूज हो गया, ₹100 का माल लिया। तो रिलायंस में किया तो ₹11-15 हुआ, राइट। बट ₹20 उसका आपने पहले से एलोकेट नहीं किया था जी, तो ₹20 पे शॉर्ट पेनल्टी लग जाएगा। इट इज नॉट बिकॉज डीम्ड हुआ या नहीं हुआ, इट इज बिकॉज आप एलोकेट नहीं किए उसको ₹20। ओके। अब बिकॉज हाँ बोलिए। एलोकेशन नहीं किया उसका पेनल्टी लगेगा। यस, पेनल्टी फॉर नॉट एलोकेटिंग, नॉट पेनल्टी फॉर नॉट कलेक्टिंग मार्जिन। सो सर वो पेनल्टी जो है वो जितना अमाउंट है उसका होगा या उसका कुछ फिक्स पेनल्टी होगा? तो जो ₹20 ये पता है अरविश भाई ने ₹20 की गड़बड़ की तो ₹20 का कुछ परसेंटेज होगा। ओके, हाँ, ओके, ओके, अच्छा। ये सवाल 4 बार वापस पूछ लीजिए कोई भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। मीन्स सर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो मेरे पास फंड घर कस्टमर का पड़ा हुआ है, आई हैव टू डू दी एलोकेशन। मीन्स मेरा प्रोप का, इवन दो आई हैव 1,000 करोड़ बट मैंने एलोकेशन नहीं किया तो आई एम गेटिंग अ पेनल्टी ऑन दैट इफ माय क्लाइंट इज ट्रेडिंग। काम बढ़ गया। हाँ, ऐसा है। सो सर हमारा सिंपल बिजनेस पॉलिसी है कि हमारा जो है ना, आपके बिजनेस मॉडल के हिसाब से सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर के हिसाब से बिजनेस मॉडल चेंज करें। करेक्ट। तो अभी सर जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कसिंग, मींस हमारा जो है ना वो सीसी में 100% अरविश भाई आपका मॉडल मुझे पता है, मैं वापस एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 100 क्लाइंट है, साहब ने आपको 1 करोड़ का चेक दिया, आपने 1 करोड़ का चेक क्लाइंट अकाउंट में रखा हुआ, आपने टच भी नहीं किया। कितने अच्छे ब्रोकर हो आप, ठीक है, 1 करोड़ 100 करोड़ पड़ा हुआ है, बैंक को फ्लोट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने खुद का 1,000 करोड़ का बैंक गारंटी अपने जेब से दे दिया सीसी को, वो पूरा प्रो का है, बहुत अच्छी बात है। आज टिल टुडे, बिफोर 2nd मई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपका मार्जिन कलेक्शन पूरा कंप्लीट था। लेकिन 2nd मई के बाद ये काम करोगे तो पेनल्टी लगेगा। आपको जो 1,000 करोड़ रुपया सीसी को दे रखा है, 1,000 करोड़ रुपए में से आपको 100 करोड़ एलोकेट करो और 900 करोड़ अपने नाम पे रखो। ऐसा सीसी चाहता है, ऐसा ही सर्कुलर चाहता है। करेक्ट। सर अभी वो 100 करोड़ आपने जो एलोकेशन का बोला, तो मेरे आई मे हैव 1 लाख कस्टमर्स, तो वो 100 करोड़ का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करूं? आपका फाइल लोड करेंगे 1 लाख रिकॉर्ड के साथ। और अपने देश में तो एक ब्रोकर के 10 करोड़ कस्टमर होते हैं, 10 तो नहीं बट 1 करोड़ होते हैं। वो करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। ओके। और सर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था दैट सेल के टाइम पे अगर ब्रोकर सेल करता है कस्टमर का सिक्योरिटी, या तो कस्टमर भी सेल करता है बट उसका लेजर 0 है और कस्टमर सेलिंग करता है, तो उस केस में भी ये एलोकेशन करना पड़ेगा, राइट? ये आज के तारीख में करना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रस्ताव उनके पास पेंडिंग है और 99% मुझे विश्वास है वो मान जाएगी। ओके, सो उस केस में अर्ली पे इन 3 डे होगा तो वो आई थिंक इट विल बी कंसीडर्ड एज इट विल बी, मतलब शॉर्ट कलेक्शन का पेनल्टी नहीं लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। ऐसी उम्मीद है। ओनली मतलब देयर बी 5-6 केसेस, उनमें से एक वो है सेल वेयर पेन वाज डन ऑन सेम डे। ओके। बट इट्स सर एक क्वेश्चन ऐसा है दैट ये 2nd में से ऐसा हमने सुना था कि
फर्स्ट फेज में ऐसा इम्प्लीमेंट होगा फॉर मे बी 1 or 2 months कि पहले रियल टाइम नहीं बट ईओडी में अलोकेशन का फाइल अपलोड करना पड़ेगा आफ्टर मार्केट आवर्स में, एंड ग्रेजुअली इट विल मूव टू द रियल टाइम बेसिस। तो रेगुलेटरी की इच्छा है कि जैसे 2-3 केसेस हुए, धीरे धीरे करके रेज किया, बट अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं है, उस पर कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। बट आज का वेबिनार का मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टू गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज सीसी से भी बात होती है, बोलते हैं यार कैसे बेसिक सवाल पूछे लोग। अब हाई लेवल सवाल कोई लोग पूछे नहीं कि भैया कि आज डीम्ड और शॉर्ट के डिफरेंस को लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए रूटीन डिस्कशन में आदमी पूरा हो जाता है, आगे प्लानिंग नहीं कर पा रहा। हेलो विजय जी, एक मिनट, डिस्कशन खत्म हो जाए। उत्तम जी, so what we understood के say suppose I have a client है जिसका मेरे पास 100 रुपीज कैश पड़ा हुआ है, so मुझे उसका सिर्फ 20% 20 रुपीज ही allocate करना है। Is my understanding correct? No, 100 allocate करो, 80 allocate, 0 से लेके 100 कुछ भी allocate कर सकते हो। हाँ, बट वो मेरे क्लाइंट, अगर टोटल क्लाइंट का बैलेंस मेरे प्रोप्राइटरी फंड से अगर एक्सेस हो जाता है तो फिर वो मुझे उतना पैसा मूव करना पड़ेगा कोलेटरल में। तो क्लाइंट का पैसा जो क्लाइंट अकाउंट में पड़ा है वो सीसी को दे दो। और इन केस अगर एंड ऑफ द डे में अगर कोई क्लाइंट फंड यूटिलाइज नहीं कर रहा है और फिर वो मुझे विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट दे रहा है, देन हाउ टू प्रोसीड? सर वो हो जाता है सर, वो ऑफिस में सब सेट होता है, ऐसा कुछ मतलब वो आईसीसीएल, अगर हमारा प्रीफर्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आईसीसीएल है, देन आईसीसीएल विल रिलीज दैट फंड इमीडिएट बेसिस, और उसमें भी सर ये ऑपरेशन ऐसा होता नहीं है कि एक दिन शाम को आया सारे क्लाइंट ने पैसे मांग लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, रूटीन में हो जाता है, इट्स अ रूटीन ऑपरेशन। एंड बाकी कोई सीसीज के होते हैं, इमीडिएट रिलीज होता है, एंड ऑफ द रिलीज होता है, सब कुछ होता है सीसीज के पास, अलग सीसी अलग पॉलिसी। नहीं, एज ऑफ नाउ कुछ उसमें टैट है ना कि अगर कुछ 1 बजे से पहले करेंगे तो अपना सेम डे रिलीज होगा। सी एज पर द रनिंग अकाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ द regulator, if the client asks for money in the running account, I think you have 3 days to pay him off. In any case, you have at least you can pay off the next day, और next day तक पैसा आ जाएगा। So ऐसे कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस इशू नहीं है। Fair enough, fair enough. हाँ जी सर। Thank you, Uttam ji. Thank you very much. Your question, please, Paresh ji. Your question, Paresh ji. Saurabh ji, your question, please. उत्तम, ये जो डीम्ड एलोकेशन, शॉर्ट एलोकेशन के बारे में एक क्वेश्चन था एट द वेरी बेसिक लेवल। मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, बट विल द अमाउंट दैट इज एलोकेटेड क्लाइंट लेवल पे, मेरे पास जितना फंड्स है वो मैंने एलोकेट कर दिया, will that have to reconcile with the total funds deployed with the CC? Yes, in fact your segregation file that you load today, yeah, it is effectively that. Right, but what do we do today? At the end of the day, there is a lot of funds that are shown as retained with the member, और जो मेरे current account में पड़ा है, so वो उस जो funds retained with member है और जो current account में पड़ा है, client account में पड़ा है, वो उसको मैं beginning of day मुझे allocate करना पड़ेगा और मुझे वो CC को देना पड़ेगा। Effectively, if you want the clients to trade a lot, then retain with the member should probably pro money. Rule of thumb. But you should not retain anything of the client. Everything should be the CC in the allocation or the breakup, so that you can give maximum limits to the client without the fear of penalty. So मैं जैसे आज इंट्राडे में 10 allocate करता हूँ, 10 मैंने ट्रांसफर कर दिया, 10 मैंने एक्चुअल फंड्स ट्रांसफर किया फ्रॉम क्लाइंट बैंक अकाउंट टू सीसी, तो उसका मुझे एलोकेशन करके देना पड़ेगा, रियल टाइम देना पड़ेगा। और एंड ऑफ द डे जब मैं विड्रॉ करता हूँ तब मुझे ये भी बताना पड़ेगा उनको कि मैं किस क्लाइंट का पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। Something of that sort. See, the point is, suppose you are deposited 10% of the CC. CC wants a backup. A01 का कितना, 2 का कितना, 3 का कितना, Pro का। Then you take the money out. 10 crores become 9 crores. Then there has to be A का कितना, B का कितना, Pro का कितना। ठीक है, obviously it will be in different ways, different CCs and different processes, but effectively this is what it's going to be. But bottom line, you're saying it will have to reconcile with the total funds. If you read the SEBI circular, it says clearly that should tally. Okay. And any solution to segment-wise allocation आ रहा है या इसको कैसे? How do we live with it? This remains. That remains. So this is also one of the requests with the CCs. Let's see what comes out. Okay.
Because अभी हम very honestly practical purposes में जो करते हैं, client account में पैसा पड़ा है, based on historical जितना हमें मालूम है डेटा की कितना हमें, हम कभी कैश मार्केट में दे देते हैं, कभी F&O में दे देते हैं, based on the funds available, हम इंट्राडे में वो funds deploy कर देते हैं. अब इसको real time upfront allocation करना seems the challenge that we are struggling with, very frankly. Yeah, we'll all have to increase the amount of capital in the system, our own capital in the system. और I know some brokers जो बोले कि जब client पैसा देता है उससे पूछते हैं वो segment wise, उनके front end में limit ही segment wise देंगे. Client बोलेगा सब मुझे ये करना है, रुक 5-10 मिनट रुक, पहले घुमाता हूँ, घूम गया अब ले limit. For those who are running, don't have too much cushion inside. So the alternate solution that is there कि अगर मैं अपना own funds deploy कर भी देता हूँ by way of BGs और own funds और FDs के through मैं कर भी देता हूँ, तो मुझे let's say जो intraday allocation करना है वो शायद नहीं करना पड़ेगा, मैं उधर अपने own funds का allocation दिखा सकता हूँ. Is that correct? Yeah. If the proposal is accepted, yes. Okay. हाँ. Thank you. Saurabh ji, your question, please. Toshniwal ji, your question. Yeah. So, practically, जो credit for sale अभी देते हैं अपन clients को, share बेचा, early paying किया और उसके सामने limit दे दी, नया share buy कर दिया. Right? So, are you there? Can you hear me? Yes. We can hear you, please We can hear you. बोलिए तो शायद. तो जो credit for sale आज अपन देते हैं और customers के सामने वापस दूसरा delivery buy कर सकता है. Practically बंद ही हो जाएगा because आप कितना capital allocate करते जाओगे. वो तो आज भी कर रहे हो. आज भी client भी माल बेचता है, early paying करता है, नया माल लेता है, उसका margin दूसरे client थोड़ी भरते हैं, आप ही तो भरते हो. अच्छी अभी कैसा होता है, अभी आप मार्जिन भर रहे हो, वो जब लग रहा है उतना पैसा आपका है. हाँ. राइट. बट आप एडवांस में एलोकेट कैसे करो? समझिए 10 क्लाइंट ने 1-1 लाख का शेयर बेचा. राइट. हाँ, एडवांस आप ये करें, एडवांस में एलोकेट कैसे करें? हाँ, 70 हजार सब बाई कर तो उसके लिए इसलिए वो प्रपोजल है इंट्राडे, मतलब आपको शाम तक का टाइम मिल जाएगा कि सपोज आपने प्रो में डाल रखा है थोड़ा रुपया, शाम तक का टाइम कुछ महीने के लिए मिल जाएगा कि परपेचुअली मिल जाएगा? वो उसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकते. वो अगर शाम तक मिल जाता तो नहीं तो क्या होगा कि सर 10 क्लाइंट ने 1 लाख का शेयर बेचा. अभी ऊपर वाला सेकंड में जब जाएगा, ऊपर वाले का नाम लेके इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद थोड़ा डेवलप होगा. और आप सही कह रहे हो, यदि एकदम स्ट्रिक्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में आ गए तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा. ये आपकी बात बंद करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे भी लिमिट नहीं. लेकिन एक तो 2 महीना बाकी इम्प्लीमेंट करने में, उसके बाद 2-3 महीने सेटल होने में लगेगा, तो 6 महीने आगे का स्टोरी. पर तुषार जी उसको तब हैंडल करते हैं. और अभी ये यूएटी का क्या स्टेटस है? यूएटी सीसी से बात हुई, वो हफ्ते भर में दे देंगे. नहीं देंगे तो हम उनसे झगड़ा कर लेंगे कि ऐसा मत. झगड़ा क्यों करेंगे? मतलब प्यार दोस्तों से, झगड़ा तो दोस्तों से ही कर सकते हैं. नहीं, ठीक है. Saurabh ji, your question, please. I finished my questions. Thank you. Yeah. Rajesh ji, your question, please. Yeah, my question is a bit tricky on allocation. That my client is running on cut-to-cut basis. He has 1 lakh rupees and he has position, and exchange has increased the margin. Then who will be penalized? CCs, can you answer this? So the way things stand, the circular says that whatever is the margin collection requirement, to that extent allocation should be there. Okay, but these are the possibilities if this happens. So for example, today also with peak margin, if it increases and you don't have margin, then the penalty is applicable. Similarly, here also it will be applicable. So as per the current scenario, I feel that it will be cut from my pro account, and at the end of the day, will I get the backup that you have been penalized because of this client? Yes, so penalty files, so the way we give peak margin reporting or client margin reporting, short penalty data, similarly we will give the data.
Okay. The next question is that this upfront check thing won't work, right? The client should be having a clear fund. So broker should be having a client's clear fund, then only he can allocate the limit, right? नहीं No ऐसा check. नहीं, ऐसा नहीं है, चेक आया तो आप अपने ओन के पैसे से एलोकेट कर सकते यानी क्लाइंट का मुझे चेक आया, उसका क्लियरिंग डेट नेक्स्ट डे का है, तो क्या हैं। करूंगा नहीं, क्लाइंट का चेक आपके हाथ में आ गया तो आप अपने ओन के पैसे से एलोकेट कर सकते मैं? ओके, हैं, किसी और क्लाइंट के पैसे का एलोकेट। ओके ओके ओके, थैंक यू। Maniji, your question, please. Hi, it's very basic. If customer is having 1 lakh rupees yesterday evening, and today customer has taken first position in equity, okay, and around 11 customer cut down the equity position and taken in MCX. So how we'll be handling as a CC or CM? So that's my basic question. So how short allocation or deemed allocation will be there? So first, suppose he is giving you 1 lakh rupees and you put in yes, sir, equity derivatives, suppose. And the client trading equity derivatives, they spread off very good, no problem. Then this fellow decided to trade in cash. So in cash, there will be some deemed allocation. Yes. Okay, then he spreads out the cash, then he decides to do commodities. Yes. So in commodities also there will be deemed allocation, then he'll spread out. Then he decides to do currency. Every 1 hour he decides to do a different segment. It's his wish, you're allowing him. So in 3 places there will be deemed allocation, then you'll get a end of the report. Ki boss, penalty, penalty, penalty. Then if they accept our proposals, which I've repeatedly said, then you will be able to say ki boss, credit lying in another segment, please don't charge me penalty, and the penalty may not be waived for the intraday thing. Does that answer your question? Sir, my see how allocation will be handled by the end of the day. So now let's come to end of day. So end of day where to handle in a system. So end of day where he is positioned. He is not having any position in anywhere. So it's okay. Kahin bhi allocate karta, doesn't matter. But there will be short allocation or deemed allocation penalty will be there, no? So then probably you have not, be probably you did not understand what I said. I'll repeat. As on today, you will be levied penalty in all the 3 places. We have made a proposal. We have sent a request to the regulator, which is the consideration. For such cases, at the end of the day, you will be given the option to send a submission key. The limit was the margins was available in other segment intraday. For such cases, the penalty will be waived. But this is at a proposal stage. It has not yet been approved. Okay. Sir, if we allocated all the segment 2020 like that, 20,000 like that, so there will be no penalty. Mr. Mani, have you read the SEBI circular? No, I need a clarity. So I'm just confused on this. Which paragraph of the circular you are referring to? Which you can understand? This May 2nd one, that is before customer takes position. So we need to allocate now. So based on that, please consider getting in touch with me offline. I'll try to answer it. Okay. Okay. JV Equities, your question, please. JV Equities. Hiralji, your question, please. Yeah. Hi. Thank you. So my question is, when a client actually has a short margin because of whatever reasons. So right now, in this circular, there will be a penalty because I cannot allocate it from prop because client actually does not have that much money. So there will be a penalty at the end of the day because of short allocation. And in the current scenario, there is already a short reporting of margin, the client margin reporting, which is there. So will both of these they coexist from 2nd of May? So will there be 2 penalties or 1? It will be 1 only. It will be higher of the 2. That is there will be a in principle clear with the CCs. It will be higher of the 2. But the circular is yet to come. So there will be a circular specifying this. Yeah, but I mean, see, those are some of the reasonable assumptions. Even CCs and SEBI understand you cannot penalize twice for the same mistake. So it will be higher of the 2.
That is the understanding. That seems to be also the regulatory mind. कि double penalty से लेंगे, double jeopardy नहीं करेंगे. Yeah, true. It should not be double, but there was not. That is the. But then, as you rightly tell the circular accounts, it is just a reasonable expectation. Thank you. Hemanji, your question, please. Kalpeshji, your question. Kalpeshji, your question, please. Deepeshji, your question, please. या सर दिपेश बोल रहा हूँ. एक्चुअली सर अभी जो अपना बात हो रहा था, जो सर ने बताया कि अपना सेबी के पास अभी समझो एनएससी कैश में मैंने अलोकेट करके रखा है और मेरे क्लाइंट ने एफएनओ, करेंसी, कमोडिटीज सारे सेगमेंट में इंट्राडे काम कर लिया. तो जैसे अभी उत्तम जी ने बताया कि वो सेबी के पास प्रपोजल में कि इंट्राडे का अपने को दिखाने के लिए मौका मिलेगा वहां पर. लेकिन जस्ट मुझे सर एक कंफ्यूजन ये था कि अगर समझो मेरे क्लाइंट ने कैरी कर लिया तो इसके लिए क्या होगा? अगर कैश में कोलेटरल देके रखा है और एफएनओ में लेके गया कैरी फॉरवर्ड करके, तो फिर वो कैश से कोलेटरल विड्रॉ करो और एफएनओ में उसको दे दो, रीअलोकेट कर दो. रीअलोकेट तो ये भी मुझे मतलब ईओडी में रियल टाइम करने मिल जाएगा कि क्योंकि आपने जो अभी स्पेसिफिक आपने वर्ड यूज किया था, कि आपने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था कि अगर क्लाइंट इंट्राडे करके निकलता है तो ही आप कर सकते हो. आपने मतलब बार-बार ये पॉइंट पे जोर दिया था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था. हाँ, वो एक्चुअली एनसीएल टीम ने कंफर्म किया ना कि जो प्रपोजल भी है वो इंट्राडे के लिए है, एंड ऑफ डे के लिए नहीं. तो मुझे करेक्ट किया उन्होंने, इसलिए मैं स्टैंड करेक्टेड. बट यह आपको करना पड़ेगा, एलोकेशन की मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, ठीक है, चलेगा. थैंक यू. ऑलराइट. Neeraj ji, your question, please. Sir, Neeraj here, sir. Yes, please. क्लाइंट ने कोलेटरल दिया हुआ है जो ट्रेड के टाइम पे तो ब्रोकर का जो ओन फंड्स है वो अभी के लिए एलोकेट हो रहा है, और उसके बाद जो क्लाइंट का कोलेटरल है वो उसका इफेक्ट आता है और ब्रोकर का फंड रिलीज हो जाता है. अब ऐसा नहीं होगा, पहले अभी क्लाइंट का होगा. क्लाइंट का कोलेटरल पहले यूज हो जाएगा. पहले होगा. मैंने अब शुरू में प्रेजेंटेशन में बोला था, शायद आपको ध्यान नहीं है. सर्कुलर में भी लिखा हुआ है. या अभी ये होता है कि पहले ब्रोकर का टच होता है, फिर क्लाइंट का से रिएम्बर्समेंट जैसा मिलता है. अब ऐसा नहीं है, अब सीधा क्लाइंट का पहले होगा. ओके. हाँ, वरना तो बर्बाद हो जाएंगे. राइट. और ये केस में नॉट इन दिस केस, लेकिन आप सर आपने बताया कि जैसे प्रपोजल एक पेंडिंग है जहाँ पे एक्सेप्शंस में पेनल्टीज नहीं लगेंगे, लेकिन ये केस में इसी तरीके के कोई रीजन से अगर आरआरएन बोर्ड पे चला जाता है तो क्या होगा? आरआरएन मोड सौदा से क्या करो, आरआरएन मोड से बाहर आ जाओ, सौदा स्क्वायर अप कर लो. जिस सौदे का जैसे आरआरएन मोड में गए वो सौदा से क्या कर दो, या फिर नया कैपिटल दो, एबीसी कर दो. ओके. लेकिन उसको अवॉइड, क्योंकि क्लाइंट का पैसा दूसरे सेगमेंट तो है, दूसरे सेगमेंट में तो है यार, तो भी ब्रोकर को आरआरएन मोड में जाना चाहिए. हाँ, जाएगा ही. वो इशू नंबर 2 लिखा था ना मैंने प्रेजेंटेशन में, ये तकलीफ है. लेकिन उसके लिए कुछ सॉल्यूशन है सर? है, उसका सॉल्यूशन में लिखा है. ज्यादा परसेंट आप मूव कीजिए एक से दूसरे सेगमेंट में. वो सीसी तो आपको इंटरफेस देके बैठा है ये मूव करने के लिए. लेकिन सर वो एक बार आरआरएन में चला गया तो सब पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाता है सर. बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा. तो आपको अरे अपना ऑफिस चलाना अपना काम है यार. फ्रंट एंड से कंट्रोल कर लो, किसी को बोलो सौदे पे नजर रखे. ओके सर, थैंक यू. वो तो अभी भी प्रॉब्लम है ना, ऐसा कई बार होता है ना कि कैश मार्केट में लिमिट और एफएनओ में अपने 90% पहुंच गए, होता है ना. राइट सर. तो संभालते हैं ना, संभालना पड़ेगा यार, दुकान लेके बैठे. तो इफेक्टिवली क्लाइंट का सेगमेंट वाइज लिमिट कंट्रोल करना जरूरी है, इवन इफ उसका कोलेटरल दूसरे सेगमेंट में है, उसका एंड ऑफ डे पेनल्टी नहीं लग रहा है तो भी. बिल्कुल सही फरमाया. राइट. आप अपने फ्रंट एंड की सॉफ्टवेयर में कंट्रोल डालिए ना कि यूजर शिफ्ट कर पाए कि एफओ से सीएम करना है, सीएम से एफओ करना है, फिर वो एपीआई से सीसी को अपलोड करे. जब वहां से कंफर्मेशन आए तो उसको दूसरे सेगमेंट में काम करने दो. आपको अपने फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर को चेंज कराना पड़ेगा. राइट सर. वो है सोल्यूशन वहां पे. राइट सर, थैंक यू. थैंक यू. Itna, your question, please. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes, please. I have two questions. One is if let's say we have client has given check
on T day, and we have allocated that 1 lakh rupees check to the CC. Okay. In which And segment? that's in FO. Okay, in derivative. And client has run the trading, created position, and after that on check clearing date, that particular check got dishonor. And then what happened in this case? This is my first question. Good question. Okay. And can I ask second question? Yeah, please. Yeah. My second question, do we get the APIs for peak margin, this thing for intraday peak margin instances? Why do you need API for intraday peak margin? We can likewise, if we get the APIs for peak margin, this thing, peak margin thing, then we can directly convey this to client on real time basis. This is one thing. Front end से control हो जाएगा ना madam. Yes, but if clients created unhedged position, okay, and yes, in that particular reason, his तो actually बाजार में कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, पैसे देके सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए, वो रियल टाइम पूरे सबको मॉनिटर करता है और आपको फर्स्ट रिपोर्ट देते रहता है. Yes, correct, sir. So we have that solution, not an issue. But even exchange का जो peak का जो amount होता है, वो कब capture करता है, that we don't know. वो नहीं बताएंगे. हाँ, वो नहीं बताएंगे तो yes. So that is the thing. उनको बताना भी नहीं चाहिए, वरना सब बदमाशी करेंगे. There were two questions that you raised. Let's solve both your questions. Yes, first. yes, sure. Your first question was the check gets bounced. What happens today? If you receive a check and it gets bounced, what happens today? The client has to pay short margin penalty. Yes. So he will pay even short allocation penalty. It will be one and the same. There is no difference. But on the T day, we will not CC charge in the. CC को पता कैसे चलेगा कि पेनल्टी लगाना है? हाँ. CC upfront पे चल रहा है ना? See, you have 3 days, 5 days to eventually rectify any such errors also in the upload. But eventually, CC will come through. You have got it short. Yeah, actually, I'll build on when मैंने बोला था ना कि एक डबल पेनल्टी लगेगी, एक ही लगेगी, तो कलेक्शन की पेनल्टी लग जाएगी ना, तो पेनल्टी तो लग गई, तो पहली पेनल्टी ऐसी लगनी नहीं थी. So there's no difference between the two scenarios. And your second question was related to peak margin number not coming through the API. Now, Uttam's simple point is, why should you be bothered? What is the peak margin number? Your front-end trading software, it should not allow client to trade beyond his money. And if you are not allowing him to trade beyond his money, where does this problem arise? I think Chetna is not on the call anymore. And she's dropped off. Take the next call. It's logged off. Yeah, please move ahead. Rajesh ji? Yeah. Any change in I need a specific time for EOD file upload, and will the broker be permitted to upload any file after EOD? CCs can answer this question. Will there be a cutoff for this file upload thingy? There will be a cutoff. We'll announce, but it will be meaning sufficiently after that it will definitely be few hours after the market close. So there will be definitely sufficient time after market close. Exact timings will confirm. Okay, thank you. Yeah, I have a question. Yeah. So in case of this, we do not have a prop fund. So all by this regulation, we are required to park all fund with the CC. So since the all fund is with the CC, so other regulation of SEBI payout, will it require? Quarterly settlement में सबकी बात कर रहे हो? Yeah, वो तो करना ही पड़ेगा. No, because fund is already with the CC. The risk of the default. The regulation, if you see the overall object of the regulation, SEBI payout is
to safeguard the interest of the investor, but the fund is not with the broker, fund is with the CC. ठीक है, सेबी का रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं कि वो बंद कर दें. ठीक है सर. नहीं, there are multiple issues. It's not that simple. The objective of SEBI, the objective of SEBI's regulation was very clear that if funds are actually settled, then the customer receives those funds in his account. Then in a way, it is a settlement which is happening. Just by money lying for you, 5 years with the CC doesn't mean settlement is happening. And then when a dispute arises, it's accumulated dispute for 5 years. That is the principle behind periodic settlement. So that principle doesn't get knocked off just because the money is with CC. Okay. And a second question is that in case मैंने zero allocation किया है, so can I do the allocation from the prop to this client? Let's say the client has transferred the fund through the payment gateway, and can we allocate, because the zero balance it doesn't allow to upload the zero balance. So how we do this? वो segregation के zero balance की बात कर रहे हैं, allocation में file अलग. Yeah, allocations. Because the allocation में morning में client A zero है and zero is not allowed. So I have prop fund enough fund and I want to transfer the allocation from the prop fund to client A. कर सकते हैं ना जी, आपको फंड ट्रांसफर नहीं आया, आपके हाथ में चेक आ गया तो भी आप एलोकेट कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी मनाही है. Okay. Your prop funds you are allowed to do it so long as you have received some way of collateral. आपके पास non pledgeable stock है तब भी तो आप prop से allocate करेंगे ना. And I believe that the API will be available for these mechanisms. That CCs can answer. They are here. I think it should be available for allocation. No. Yes. For this allocation. purpose, that we have already issued circular. No, for the API. Yes. I mean, this is the same purpose as allocation. ना आप ये कोई दूसरा purpose नहीं है. Allocation is the only thing that we are speaking of, right? Okay. Thank you. उत्तम जी, राकेश बोल रहा हूँ. बोलिए सर. अभी अगर प्रपोजल जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तब तक 20 जुलाई का सर्कुलर फाइनल है अपने लिए. से फॉर एग्जांपल उसमें क्लाइंट ने जितना मुझे अलोकेशन दिया है, कोलेटरल दिया है इन टर्म्स ऑफ फंड और स्टॉक, उतना ही मुझे अलोकेट करना है आगे. अभी एक क्लाइंट, और वो भी सेगमेंट वाइज मुझे अलोकेट करना है. अभी एक क्लाइंट मुझे एक स्टॉक दे रहा है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस दे रहा है, आफ्टर हेयर कट 1 लाख रुपीस का स्टॉक है, मैं एक सेगमेंट में अलोकेट कर रहा हूँ. उसने वो सेगमेंट में पोजीशन बना के जीरो कर दिया, मुझे बाद में उसको अनप्लेज करना है और दूसरे सेगमेंट में रिप्लेज करना है, तभी दूसरे सेगमेंट में मैं लिमिट दे पाऊंगा. बिल्कुल सही. तो इसमें सीसी का टाइम है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली वो रिलीज कर रहे हैं, एक इंटरवल पे रिलीज कर रहे हैं. और एमसीएक्स एमसीडीएक्स वाला तो सेकंड डे रिलीज कर रहा है, सुबह 9 से रात को 9 तक रिक्वेस्ट लेगा, दूसरे दिन रिलीज करेगा. तो एमसीएक्स एमसीडीएक्स में मैंने अगर रिप्लेज किया है तो वो क्लाइंट दूसरे कोई सेगमेंट में सेम डे के लिए ट्रेड ही नहीं कर पाएगा. बिल्कुल सही. और उसमें ये लोगों को करना पड़ेगा एमसीएक्स एनसीडीएक्स को, मुझे लग रहा है रियल सेम डे. ये प्रपोजल लेना चाहिए. ठीक. सेकंड एक क्वेश्चन, एनसीएल में हुसैबा जी ने बोला कि हम लोग मार्जिन वाइज रिप्लेज वाले का फीफो बेसिस करेंगे, जिसने मार्जिन यूटिलाइज किया है उसको बेनिफिट देंगे, जिसने नहीं किया है उसको बेनिफिट नहीं देंगे, रादर देन जिसने फर्स्ट रिप्लेज किया है. तो अभी क्वेश्चन ये था कि मेरे पास अगर 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट ने ओएनजीसी किया है, 10 क्लाइंट का कैप है, मतलब मेरा मेंबर वाइज लिमिट कैप है 1 लाख क्वांटिटी का. उसके सामने 5 ही क्लाइंट है, मेरा रिप्लेज 5 क्लाइंट का 1 लाख क्वांटिटी क्लोज हो रहा है, और 5 ने मार्जिन यूटिलाइज किया है, दूसरे 5 ने मार्जिन यूटिलाइज नहीं किया है, पर उसमें से समझ लो दूसरे 5 के लिए मैं फंड अलोकेट कर रहा हूँ रियल टाइम. तो पहले वाले 2 क्लाइंट अगर पोजीशन जीरो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सीसी 6 और 7 नंबर वाले को बेनिफिट दे देगा. तो ये केस में क्या होगा, 6 और 7 वाले का तो फंड भी अलोकेट किया था और स्टॉक का भी बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये भी नॉन कंप्लायंस होगा. नहीं वैसा नहीं होगा. ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो हम लोग डायनामिकली करेगा, वो डायनामिकली सिर्फ वो 50-50 रूल के लिए करेगा. फॉर द अदर थिंग्स लाइक वो मेंबर वाइज लिमिट जो है, मेंबर वाइज लिमिट के ऊपर जो आएंगे उसके लिए तो आपको एलोकेट ही करना है उसको. तो बेनिफिट सपोज मतलब ये 1 लाख शेयर का लिमिट है,
और 7 क्लाइंट है, जो 7 क्लाइंट ने आपके सपोज ऐसे लेते हैं 1 लाख रुपीस का लिमिट है, 7 क्लाइंट ने 20-20 हजार दिया है, तो इसमें से जो लास्ट 2 देंगे उनका तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, उनका आपको एलोकेट ही करना होगा। तो अभी ये 5 क्लाइंट का सुन लीजिए, तो ये 1 लाख रुपीस का 5 क्लाइंट का शेयर है, और सामने सपोज कैश सिर्फ 60,000 है, तो ये 5 में से कौन पहले ट्रेड करेगा उसको? भानु थोड़ा साइड ट्रैक हो गया, सॉरी आई एम जंपिंग इन। So see, number one, forget there's no cash issue. Okay. So there's no cash issue here. A broker has given 100 crores in prop as FD. Now put it aside. And shares, he's given 10,000 shares, 20 clients have given. Okay, but the limit is 1 lakh. And right now nobody is utilized. Okay, now people start utilizing. 1 to 10 have utilized, so everything is fine. They are allowed 1,10,000 per client, so they utilize, it's fine. Baki prop ka use ho raha hai. Now the 11th client cannot utilize because member-wise limit is up. You are with me, Vanu? Yes. So 11 cannot utilize, so he has manually allotted something to 11 and काम करो, which he did at say 12 noon. Now at 1 o'clock, client number 1 squared up his position. So 10,000 quota became free. So client number 11 will get the quota. Is it a correct statement? Because first use. Bhanu, I am here. Yeah, I understood. So now Mr. 11 has got the quota allotted to him, which is great. Good news. But unfortunately, the broker has also allotted him additional active allocation because of the cash. So now, has the broker done a non-compliance by giving me extra allocation? That is the question, right, Rakesh bhai? Yes. So Bhanu, just have a look at this and just keep this in mind when you design your the penalty rounds. Yeah. Thank you. Rakesh bhai, it's a feedback. That's all. बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं उत्तम ये, because your front end is actually not supposed to allow that kind of trade. Front end थोड़ी securities का limit देखता है. आप क्या देख रहे हो? एलोकेशन तो आपको फंड की करनी है. सिक्योरिटीज तो खुद ही हो रही है. नहीं, लेकिन फ्रंट एंड को स्टॉक का थोड़ी वाला होता है, अपने को नंबर बना के अपने बता. नहीं, देखिए उत्तम जी, ये क्या होगा ना, उसका जो इसने अभी ये क्लाइंट ने सिर्फ स्क्वायर ऑफ किया है, उसका शेयर तो उसने रिलीज नहीं किया ना. मिस्टर 1 ने स्क्वायर ऑफ किया है, लेकिन मिस्टर 11 का कोटा मिस्टर 11 का कोटा नहीं होगा, क्योंकि ये मिस्टर 10 का आप ये जो मैंने बोला ना डायनामिक वाला, दैट इज ओनली फॉर 50-50 रूल. इसके वो दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. आई एम सेइंग दैट दिस 11th पर्सन, because we will accept only till the extent of OL limit. वो उसके 11th ये पहले ने स्क्वायर ऑफ किया तो 11 का एलिजिबल नहीं होगा. तो one has to unpledge it to get the क्योंकि whatever is dynamic allocation utilization based, वो सब जो मैं बोला, that is only what is within the member limit. Yeah. Vendra bhai, that's a point. Correct. So it is fine. There is no confusion, I think. Any other questions? No, thank you. अच्छा, प्रकाश. Yeah. Uttam ji, so there are a couple of questions. So so we had got clarity from CCs that supposing we have given 100 crore worth of collateral, cash collaterals. So it is not necessary that I need to allocate whole 100 crore to clients or pro. So maybe possible I can allocate 50 crores to clients, and whatever is my actual pro balance available in my client account or settlement account, only those balance I can allocate to pro. So there may be some difference between the actual collateral available with CC. So I think can the CCs clarify, if I deposit 100 crores collateral with you, do I need to give a breakup? Entire 100 I can do breakup of 40 client, 40 pro and 20 unallocated. Is it possible? Will the system permit this? Uspe that 20 they'll not get any benefit. Yeah, it will not be like dead collateral. Yeah, that is fine. That is fine. But you'll accept it?
as a Yeah, system? so when you deposit collateral, you have to allocate. If you don't allocate the collateral, that will be like dead collateral. It is as good as not. Yeah, that is fine. That will be That is dead. fine. But there is no compulsion of allocating. There is no compulsion. That is true, right? So because when I want to withdraw the collateral, otherwise I need to. So we will issue that operational circular in detail. But when you actually want to withdraw, you will have to unallocate collateral and make it into that. And only from the unallocated collateral you will withdraw. Achha, so basically, the concept is every money first goes in unallocated, then you allocate it, and when you want it back, you move it to unallocated, then you withdraw it. ऐसा कुछ करेंगे? Yes. Yes, sir. Okay, Prakash bhai, I think that answers the question. But detailed operation one more thing, sir, that money which is lying in unallocated cannot be used for supporting that 50-50 also. Yeah. Okay. Thanks, Vivek. It will not be considered for 50-50 also. Better allocate well. Certainly. Okay. So there is no doubt. There are a lot of confusion. Sorry, Prakash bhai बोलते. हाँ, बोलिए Prakash bhai, क्या बोलते? मतलब म्यूट कर दिया किसी. So there are some say large value scripts or bonds 10 lakh का 1 crore का. So suppose one quantity का value ही 1 crore है. Now I have replaced it to one of the segment, right? Now as per our discussion, अभी supposing client ने 50 lakh cash में use किया है, 50 lakh FO में use किया है. So I cannot unpledge it from one segment and repledge it to another segment because दोनों ही segment में कुछ काम किया है. Correct. Only it is non-divisible quantity. It's non-divisible quantity. हाँ, hard luck. उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा. Client को बोलो दूसरा item दे. यानी ऐसा आइटम एक्सेप्ट ही मत करो ऐसा. नहीं करो, लेकिन एक ही सेगमेंट में लिमिट दो. बट ये तो रिप्लेज है ना. हाँ, एक ही सेगमेंट में रिप्लेज होगा ना भाई, एक बॉन्ड है तो. But limit तो as every, I mean all the front end system. अरे सब प्रकाश भाई ऐसा करोड़ में से एक केस होगा, उसके ऊपर सिस्टम. बट होगा ऐसा तो उसके लिए कुछ एक्सेप्शन हम मांग रहे हैं क्या? That's what I'm trying. नहीं मांग रहे. And similarly, some corporate action cases like split and all, where you may not be able to early pay it on the same day because the अब तो block mechanism आ गया, आपका तकलीफ. नहीं, hear me out. So because the ISIN in one CC is different, ISIN in another CC is different, due to which an EDIS system of course works on the CC ISINs. So डिपोजिटरी में अभी तक आइजिन पुराना आइजिन है, सीसी और ट्रेड फाइल्स में नया आइजिन है. सो हाउ डू यू मेक द अर्ली पेइंग? It's a separate question. It's nothing to do with second main. It's a existing issue, right? Existing issue, but right now it is not getting penalized, right? End of day margin shortage होता है ना, early paying नहीं किया तो. नहीं, but even if you deliver it by T+2, you don't get penalized because it is actually delivered, right? No, भाई. यदि आपने माल बेचा, उस पर मार्जिन नहीं दिया तो सेम डे पेइंग करना पड़ता है ना, वरना पेनल्टी लगती है. No, if it is actually delivered, if you read that circular 4.2 something, some point is there. If it is, I'll take this offline. If it's actually delivered, then all we'll take this offline. Are deemed to be collected. We will take this offline. So specific case. With your permission. Okay. Jatin? मेरा 3 सवाल है. एक तो पूछना है, अभी जो सपोज इंस्टीट्यूशनल ट्रेड है और एक मार्जिनेबल कस्टोडियल ट्रेड है, तो वो तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा. दूसरा, अगर जो क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा है बिल टू बिल, सपोज उसको ने 2 लाख का माल लेना है और वो सपोज 50,000 रुपए का पहला अपफ्रंट दे देता है और बाकी का 1.5 लाख देता है, तो मुझे पहला 50,000 आपको दिखाना पड़ेगा ब्रेकअप में. या कैसा? या तो फिर दिखाना पड़ेगा ब्रेकअप, क्योंकि मेरा कैश अवेलेबल है आपके साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, लेकिन दिखाना पड़ेगा, वो 50,000 कैश उसको एलोकेट करना पड़ेगा. तो अगर वो बिल टू बिल चाहता है कि एग्जैक्टली मैं आप तुमको 3 लाख का ही चेक दूं,
लेकिन वो एग्जैक्ट अमाउंट तो कैसे डिटरमिन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सब अपना चेंज सौदा करने से पहले वो कंसेप्ट ही निकल जाएगा। जो सौदा करने से पहले आपको मार्जिन देता है कि नहीं? नहीं वो बराबर है, लेकिन वो बिल टू बिल कंसेप्ट जो है, जो रखते हैं, वो निकल ही जाएगा ना। बिल्कुल नहीं, किसी ने 10 लाख का माल लिया, उसके बाद तो 3 लाख एडवांस दे दे, और जब बिल बनेगा तो 7,05,315 रुपए का चेक अलग से दे दे। ऐसे ही तो करते हैं ना अपने वो लोग। बात नहीं, कभी कोई ऐसा ही बोलते हैं कि एग्जैक्ट मेरा जो अमाउंट है उसके आज जो अपन सपोज जो फिक्स रेट है तो ये भाव में हुआ, तो अपने को एस्टिमेटेड पता चलता है कि भाई तेरा इतना ही अमाउंट होगा। बॉस तुम तो पेमेंट लिए बिना सौदा नहीं कर सकते जतिन भाई। नहीं मार्जिन लिया है दोस्त, वो पूरा अमाउंट दे देता है बिल के हिसाब से। कैसे दे सकता है? उसको मालूम कैसे एस्टिमेट मेरी बात सुनिए मतलब भाई, 1 पैसे तक एस्टिमेट अगर कर लेता है सपोज आज इसी का भाव में क्लोजिंग 300 रुपया है, तो मैं डमी बिल बनाता हूँ कि 300 रुपये में तेरा हुआ, तो तेरे को इतना कल तेरे को मेरे को पैसा देना है ब्रोकरेज एससीटी के साथ, तो वो इतना पैसा देता है। तो वो मुझे पहले अच्छा, वो इतना पैसा दे रहा है, इतना दूसरी पैसा बात पहले अगर दे उसने देता है इतना तो एलोकेट कर दो। अलोकेट कर दो, बराबर है। अभी मैंने अलोकेट कर दिया, बराबर है। अभी सपोज उतने का ही सौदा हुआ, अभी अलोकेट मैंने कर दिया, अभी उसका पेइंग के वक्त मुझे क्या एक्सचेंज से रिलीज लेना पड़ेगा, अनअलोकेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एलोकेशन हटाना पड़ेगा, पेइंग के अनअलोकेट करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि सपोज मैंने अलोकेट तो कर दिया, अरे मंडे को एलोकेट कर दिया, और वेडनेसडे को पेन हो गया, तो वेडनेसडे को अनअलोकेट करना पड़ेगा ना जतिन भाई। पेन के लेजर पर बैलेंस खत्म हो गया ना। नहीं वही तो भाई, क्योंकि वो पैसा मेरे को अनअलोकेट वापस मुझे लेना पड़ेगा, हो तो ही उसका पेन होगा ना। मेरे पास फंड है हाँ, उसका मैं पेन आपसे करने अग्री के कर रहा हूँ, लिए, आप सही बोल रहे हो, मैं आपसे अग्री कर चुका हूँ कि मेरे पास फंड है उसका पेन करने के लिए, फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा। हाँ, तो अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स है और जो मार्जिनेबल कस्टोडियल ट्रेड है उसमें कैसा करना है? ये आपका अगला सवाल है। Can CCs, how will we handle institutional trades and marginal custodian trades? नहीं, marginable CP code में you don't need to allocate, but it will get blocked from your proprietary collateral. So marginal custodian trades में deemed allocation हो जाएगा, लेकिन उसका penalty नहीं लगेगा. It get confirmed as of today by 9 o'clock, then automatic next day it will be released. Yes. And for institutional there will be anything. Yes, अभी confirm कर दिया clearing corporation. और आपने जैसा बोला कि अगर कोई अर्ली पेन करना चाहता है, मीन सेल करना चाहता है विद अर्ली पेन बेनिफिट, तो डेट इज अंडर कंसिडरेशन। यस, ये उसका कुछ है नहीं। हाँ, उसका कुछ है नहीं, इट्स अंडर कंसिडरेशन। क्यों? उसने कुछ पैसा, उसको तो पैसा ही चाहिए, वो बोलता है मेरा इतना बराबर है, बराबर सही कह, तो वो अंडर कंसिडरेशन है। हाँ जी साहब। और उसका मैं बेचा तो मेरे उधर से ऐसा पैसा चला जाएगा। यस साहब। ओके, थैंक यू। ओके जी। हेलो, या उत्तम जी, गुड इवनिंग। हर्ष दिस साइड। Just a minute, for the welfare MIs will end the Q&A at 6:15. Your weekend coming up, but we'll take this question till then. Yes, please. या उत्तम जी, I've got 2 questions. मेरा जैसे प्रो का कुछ काम नहीं है, तो जो अभी भी हाँ, तो मेरा कोई काम नहीं है, तो अभी जो क्लाइंट लोग का लिमिट होता है सीएम में, वो मेरे पैसे से ही लिमिट मिलता है, ठीक है। और अभी मैं कोई भी क्लाइंट का शेयर को रिप्लेस करता नहीं हूँ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो जो अब नया नियम आ रहा है उसके बाद क्या मुझे क्लाइंट का शेयर रिप्लेस करना जरूरी है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को? समझदारी उसी में। क्यों? नहीं, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉप कैपिटल है तो मत कीजिए, वो आपकी इच्छा है। एलोकेट कर दीजिए अपने प्रॉप कैपिटल में से, मत कीजिए उसको प्लेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, I just want to know what is the change between now and before. That's it. Sir, I've had a full presentation and so many questions on this, but I'll try again. You need to allocate upfront. How will you allocate? Okay. और एक और क्वेश्चन ये है
कि अभी तो हम आरएमएस में लिमिट देते हैं कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर में क्लाइंट का, तो आप क्या इंडिविजुअली देना चाहिए क्या लिमिट? हाँ, सेगमेंट वाइज देना चाहिए आपको। अब अलग अलग करके देना चाहिए, राइट? राइट। Okay, thank you so much. Uttam, there is one interesting question which had come on the Q&A panel, which I think we should take up. Tell me. This is addressed to the CCs. If a client in an option had given 1 lakh rupees in the morning and he earned 10,000 rupees profits, so by default now in intraday we can allow him to buy 1,10,000 worth of options, but we would have allocated only 1 lakh. The system will, once the transaction is squared up, increase the provision automatically. So how can we pre-allocate that? This has to be one more option in the drop down. One more reason. The CCs can answer. This was an interesting question I thought which had come up. किसी कुलदीप जी का है question ये. So I think, sir, let me answer it this in some other context. It is similar like giving credit of EPI. Okay. So you have done EPI and you can give credit of 80% for buying or taking other position, which anyway CC is not giving any such credit, but member can give that credit. So it is similar to like that, only that you sold option, you are expecting some money interest. So whatever is there, sir, from your proprietary you can allocate, sir. If you're, because by end of day in your ledger you will have that money because you will pass the entry. So from your proprietary you can allocate, but you will have to allocate if you want the client to use. So it is nothing but similar to that credit what you gave for API of sales done to the clients. Okay, yeah, that looks interesting. Uttam, I think you are almost reaching the timeline. Hello, Uttam. Hello, can I talk, Uttam? Yes, please. So, Uttam, I just want to say to all the members who are there online that the margining system has saved us lakhs, if not crores, in default of our clients. So a little bit of penalty in the teething initial stages is fine. We can all bear it and we have to adopt the system. तो इतना टेंशन ना लें, कुछ थोड़ा बहुत पेनल्टी आ जाएगा 1-2-4 दिन, तो सब समझ में आ जाएगा और सारे सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. थैंक यू उत्तम. जय हो. तो मैं क्वेश्चन पूछूं? यस प्लीज. अच्छा उत्तम, अभी कस्टमर जब भी ऑप्शन बाई करता है तो पीक मार्जिन कंप्यूट नहीं होता. शुरू करवाना है? नहीं, मैं एक कह रहा हूँ कि ऑप्शन जब भी बाई करता है तो पीक मार्जिन कंप्यूट नहीं होता है और वो क्रिस्टलाइज ऑब्लिगेशन का पार्ट होता है जो कस्टमर नेक्स्ट डे दे सकता है. करेक्ट? ओके. अब अलोकेशन फाइल में अगर हमने कुछ भी अलोकेट नहीं किया, I think CCs can answer this question, please. तो क्या होगा? जो भी मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट है, मिनिमम मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट उतना एलोकेटेड होना चाहिए. जो मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट तो उसमें जीरो है वर्चुअली. हाँ, तो फिर चलेगा. Whatever is what we will do is we will calculate your minimum margin collection requirement. For example, other things like delivery margin. Mr. Banu, I am asking a very specific question. एक कस्टमर का एज ए ब्रोकर मेरे पास कोई भी बैलेंस नहीं है, वो सुबह 1 लाख रुपए का ऑप्शन बाई करता है, मैंने एलोकेशन नहीं किया है और मार्केट बंद होने के पहले वो 1 लाख का ऑप्शन बेच देता है और सेम प्राइस में, और उसका क्रिस्टलाइज ऑब्लिगेशन अभी जीरो है. राइट? हाँ, तो ये केस में ना तो शॉर्ट कलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, शॉर्ट एलोकेशन हुआ, नहीं हुआ. आर वी सेइंग दैट कि कोई भी ब्रोकर कोई भी कस्टमर को कितना भी ऑप्शन इंट्राडे बाय अलाउ करे ना, ब्रोकर ने मार्जिन कलेक्ट किया ना एलोकेशन किया ना कहीं पेनल्टी लगी. Interesting observation, Madhav. I think you have to check again.
तो एक कस्टमर आता है ब्रोकर के पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रख लेता है, कहीं रिकॉर्ड में है नहीं, वो नहीं, लेकिन ऑप्शन उसमें बाई से अपफ्रंट मार्जिन की रिक्वायरमेंट तो आएगी ना सर। देखिए एंड ऑफ द डे मार्जिन है ही नहीं उसका। नहीं, वो अपफ्रंट मार्जिन नहीं लगेगा क्या इसमें? ऑप्शन बाई में पीक कंप्यूट नहीं कर रहा है सीसी। अरे पीक कंप्यूट नहीं कर रहा, लेकिन मार्जिन तो चार्ज कर रहा होगा ना। आप समझे नहीं, अभी कस्टमर का MG13 में तो मार्जिन आया ही नहीं, तो चार्ज कहाँ कर रहा है? I think we are at 6:15. We should now back out. शाम को जो MG13 आता है। तोष्टिया जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया, इसको ऑफलाइन लेता हूँ आपसे। मतलब ये मैं मार्केट में कुछ चल रहा है उसके बेसिस पे आपको मैं समझ गया तोष्टिया जी। 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी ले लिया क्लाइंट से। अरे बॉस, there is a issue with the peak margin calculation. The point is noted loud and clear. एक्चुअली यही क्वेश्चन मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। ठीक है तो ओके, लेकिन लेट्स कम बैक टू सेकंड में, बट पॉइंट इज नोटेड, पॉइंट इज नोटेड। Chalo ji, we come to the end of the program. I think we have had some interesting discussion. Sorry for those who are unable to take more questions. It's not fair to keep the CCs waiting for more long. On behalf of the association, I would really like to thank both NCL team and ICCL team for just joining us, answering our questions. I think you could also thank us because हम आपका load कम करते हैं. 100 questions ऐसे answer हो जाते तो 100 phone कम आएंगे. But having said that, it is very important. It works both ways, right? We get some clarity from you, and you get some feedback that what are the issues members are facing. जब ऐसे points आते हैं जो शायद आप भी system के designers भी बोलते हैं यार ये तो सोचा है, ये तो very good one. So thank you so much both teams. Special thank you for Kishore ji and Virendra, always sweet of you to join in and take the Q&A and help the members. Let's see how this happens. Second way is something we're looking for. Peter Paul is a problem the market has faced for long. And now we're getting system-based support to stop these practices in our office, often happening inadvertently. So that's where we stand. Thank you, everyone. Thank you so much. Have a great weekend. Bye.